नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू डे 19 ऑफ 90 डेज इंग्लिश स्पीकिंग चैलेंज। मैं हूं आपका दोस्त प्रतीक गोंडलिया और आप देख रहे हैं इंटेलेक्ट इनसाइट। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे फूड नेम्स और रेस्टोरेंट वोकेबुलरी इन इंग्लिश जो आप होटल, रेस्टोरेंट और बाहर खाना ऑर्डर करते समय इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोलना चाहते हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक पहले के वीडियोस नहीं देखे तो इधर आई बटन में क्लिक करके पहले आप वो देख ले, क्योंकि यहाँ पे हम इंग्लिश को स्टेप बाय स्टेप तरीके से सीख रहे हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे तो इस वीडियो से कनेक्ट कर पाना मुश्किल होगा। तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम चलिए शुरू करते हैं। नाउ लेट्स टेक पार्ट 1, कॉमन फूड नेम्स इन इंग्लिश। नाउ यू गाइस नीड टू रिपीट आफ्टर मी। First one is rice, means chawal. For example, I like rice. Second, roti या तो bread, means roti, right? That is how we pronounce. For example, I eat bread in breakfast. Third is vegetables, means sabjiya. For example, vegetables are healthy. Fourth, chicken. For example, I eat chicken sometimes. Fifth one is paneer. For example, paneer is my favorite food. Sixth one is fruits, means phal. For example, fruits are good for health. Seventh is water, means pani. For example, please give me water. Eighth one is tea, means chai. For example, I drink tea in the morning. Ninth one is coffee. For example, I like coffee. Tenth one is dessert, means mithai. For example, I like dessert after dinner. नाउ लेट्स स्टार्ट पार्ट 2, रेस्टोरेंट वोकेबुलरी। तो ये शब्द जो हम देखने वाले हैं वो रेस्टोरेंट में बहुत काम आते हैं। फर्स्ट वन इज मेन्यू। फॉर एग्जांपल, हाउ यू कैन आस्क, कैन आई सी द मेन्यू प्लीज। सेकंड वन इज ऑर्डर, मींस ऑर्डर करना। फॉर एग्जांपल, आई वांट टू ऑर्डर फूड। थर्ड वन इज टेबल। फॉर एग्जांपल, वी नीड अ टेबल फॉर 2। फोर्थ वन इज वेटर। फॉर एग्जांपल, वेटर प्लीज कम हियर। फिफ्थ वन इज बिल। फॉर एग्जांपल, please bring the bill. Sixth one is price, यानी कीमत. For example, what is the price for this dish? Seventh is delicious, means स्वादिष्ट. For example, the food is delicious. Eighth one is spicy, यानी मसालेदार. For example, this food is spicy. Ninth one is sweet, यानी मीठा. For example, I like sweet food. 10th, restaurant. For example, this restaurant is very good. Now let's continue with part 3, useful restaurant sentences. Now you guys need to practice to speak whole sentences. अब पूरे sentences बोलने की कोशिश करें मेरे साथ. For example, I want to order food, means मैं खाना ऑर्डर करना चाहता हूँ. Second is, can I have a glass of water? क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है? Third one is, the food is very delicious, means खाना बहुत स्वादिष्ट है. Fourth one is, प्लीज ब्रिंग द बिल, मीन्स कृपया बिल ले आइए. फिफ्थ वन इज, थैंक यू फॉर द सर्विस, मीन्स सर्विस के लिए धन्यवाद. नाउ लेट्स डू वन मिनी प्रैक्टिस सेशन. सो यू गाइस नीड टू रिपीट आफ्टर मी, ओके? नाउ रिपीट लाउडली. आई लाइक दिस फूड. बोलिए, आई लाइक दिस फूड. द फूड इज डिलीशियस. प्लीज ब्रिंग द बिल. प्लीज ब्रिंग द बिल. आई वॉन्ट टी. आई वॉन्ट टी. Like this, you guys need to keep practicing. Now let me give you homework task for this video. You guys need to write it down in the comment section. First, आपका favorite food कौन सा है वो लिखना है comment section के अंदर. And second, you guys also need to make one restaurant sentence. For example, how you can make it? I like paneer. तो पहला हो गया आपका जो होमवर्क में मैंने दिया. And दूसरा कैसे बनाओगे? Please bring the menu. तो ये मैंने एक सेंटेंस बनाया है रेस्टोरेंट के वोकैब में से, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, दूसरा आप क्या बना सकते, लेट्स से कि आपको चीज पसंद है तो आप बनाओगे आई लाइक चीज. इन सेंटेंस बनाने का मैंने बोला सेकंड टास्क में, तो वो कैसे बनाओगे? आई वुड लाइक टू ऑर्डर वन कॉफी. इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हो अपने होमवर्क में. तो दोस्तों, अगला वीडियो यानी कि डे 20 का वीडियो प्रैक्टिस डे होने वाला है. तो जो कुछ भी हमने सीखा उसका मिक्स्ड एक वीडियो बनाने वाला हूँ. यू गाइज विल रिपीट 20 सेंटेंसेस आफ्टर मी in that video, so please don't miss that video. Thank you guys for watching this video till the end. If you guys get some sort of value from this video,
then do let me know in the comment section below. See you all in the next video. Till then, keep learning, keep hustling.